confidence motion debate next week. Supreme Court allows non-invasive survey of the Gyanvapi complex. The Archaeological Survey of India will submit its report to the trial court and the findings will not be in a sealed cover. Bulldozers roll on homes of alleged rioters in Nuh, Haryana. 3 more social media accounts under scanner for fanning the communal fire. Hate monger Bittu Bajrangi, who was exposed by India Today, booked. Tribal youth in Madhya Pradesh allegedly shot at by the son of a BJP MLA. Injured victim hospitalized. Police launch a massive manhunt for the absconding accused. The Haryana police have cracked the whip. The police and a team of analysts reporting to Special Secretary Haryana government are now going through social media posts and videos to get to the bottom of the riots that rocked Haryana. On India First, we get you details of the investigation so far and the role of 2 more accused, 2 of the several accused in this case, including a Muhammad Jabir and an Ataullah. Their social media posts, their speeches and their videos are under the scanner for allegedly inciting rioters and for calling for the targeting of the police. India Today's Nitin Jain with this special investigation. तो गाइस कल नूह में फिर दोबारा प्रोटेस्ट है और सारे मेवात वहां पहुंच रही है। आपका मकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। A troubling sequence of unchecked aggression propagated through social media. India Today hunts down the provocators. We reached Monu Manesar, the 30-year-old cow vigilante whose initial announcement about attending the VHP Yatra on Monday in Nuh stirred passions. जो भी गो तस्कर है, जो वहाँ पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है। We tracked down another instigator, Bittu Bajrangi, who had issued inflammatory videos on his way to Nuh to attend the yatra. हम कोई हाव लड़ करते तो हम जिम्मेवार होते कि हमने कोई वहाँ जाके गलत हवाबाजी करी है या कोई तलवार लहराई है या कुछ करा है। हम शांति से गए हैं। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। We go after the rabble rousers on the other side of the communal divide. This is Muhammad Jabir, a 31-year-old man from Rajasthan, a cousin of Junaid and Nasir, whose charred bodies were found in Feb in Haryana's Bhiwani. The 2 suspected to have been killed by cow vigilantes. Just days preceding the mayhem in Nuh, Muhammad Jabir called for assault on police in Faridabad, accusing the cops of killing a Mewat-based cybercrime suspect in custody. अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। His provocative speech went viral, triggering tit-for-tat reactions on social media. A perfect recipe for communal trouble. When confronted by India Today, Jabir resorted to the same tactic as other inciters. Played victim of alleged aggression and defended his own actions as rightful. उस वीडियो में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला आए तो गांव में उसको मारना पीटना? मैं जी इसलिए कह रहा हूँ उस वीडियो में कि फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद साइबर थाना जो यहाँ से साइकिल को उठा के ले जाता है, जो पुलिस की तैयारी करता है साइकिल, और एक पेपर उसने पास भी कर लिया और उसको ले जाके वहाँ जाके मार देते हैं। जब मार देते हैं तो हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ वही तानाशाही वाला रौब देखते हैं उनको कि भाई पुलिस की वर्दी में चोर भी आते हैं, लोकल वर्दी पहन के चोर भी आते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्थायी थाना है, पुलिस ओरिजिनल है, तो जनाब वो स्थायी थाने को इत्तला करके आएगा। तो इसलिए हमने कहा अगर स्थायी थाने को इत्तला करके नहीं आए, हो सकता है चोरी हो, डकैती हो,
हो सकता है कोई लूट खसोट करने वाले हों सादा वर्दी में, तो अच्छा, इसलिए वो कहा। लेकिन अगर कोई आपके यहाँ आता है, अनआइडेंटिफाइड आदमी भी है, मान लेते हैं, लेकिन उसको मारना पीटना क्या सही रहेगा? देखो जी, मारना पीटना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हम रोज़ रोज़ शिकार हो रहे हैं, रोज़ रोज़ हमारे साथ में वारदातें हो रही हैं, घटना हो रही हैं, तो हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये नहीं कि मेरा जो बयान है उसको कल मैंने टीवी पे देखा था, जोड़ा जा रहा है नूह वाली घटना से, मैं इसका खंडन करता हूँ बिल्कुल। Trademark defense, denials and justifications of social media incendiaries. When prodded further, Mohammad Jabir revealed his personal grudges with Monu Manesar, the man under investigation for the murder of his cousins from Bharatpur in Rajasthan. जो आपने बोला वो इस तरीके से था कि वो प्रोवोकेटिव था, भड़काऊ था, इंस्टिगेट कर रहा था, लोगों को उत्तेजित कर रहा था कि पुलिस के खिलाफ आपको लड़ना है, और आपकी शिकायत मोनू मानेसर से भी है। उससे तो जी सबसे पहले शिकायत है, मेरे भाइयों का कातिल वही है, मेरे भाइयों को जिंदा उसी ने जलाया है। गोपालगढ़ से उठा के फिरोजपुर सियाई है उसके साथ में थी, और वहाँ लोहारू के जंगल में जाके जलाया। तो मेरे भाइयों को किसने जलाया? मोनू मानेसर 302 का मुलजिम है, उससे तो सबसे पहले शिकायत है मेरी। आप जाबिर, ऐसा लगता है कि आपका कानून से भरोसा उठ गया? सर भरोसा इसलिए उठ गया, मेरे दो भाई जो जलाए थे ना, अगर कानून होता तो बजरंग दल वालों को किसने अनुमति दी है जलाने के लिए, आप बताइए मुझे। नहीं, उसमें लोग पकड़े गए हैं। नहीं सर, पकड़े गए 3 मुलजिम पकड़े गए हैं अभी। कितने पकड़े गए? 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। मैन मुलजिम है जो मास्टरमाइंड है, मैन जो मारने वाला है, जलाने वाला है, वो अभी भी खुला घूम रहा है और फिर चैलेंज दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा दामाद आ रहा है, तुम तैयार रहना। इस पर अंकुश लगता तो शायद आज मेरा मेवात बच जाता जलने से। Social media turns into a battleground through the smokescreen of personal vendettas. Grudges fuel the fires of intolerance. क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। This is Atullah, Sarpanch of Dhimri village in Rajasthan's Bharatpur village that shares border with Haryana's Nuh. He too had issued an inflammatory video, a counter challenge to Monu Manesar in the run-up to Monday's mayhem. The clip has since been deleted. But Atullah defended the video he removed after the Nuh rioting. आपने बात की थी कि अगर तूने मेवात में कदम रखा तो अच्छा नहीं, आप अब ऐसे करना, कदम रख के बता देना मेवात। हाँ, कदम रख देना। हाँ, ठीक है ना, अब रख देना, अवगत करा दिया अधिकारी को। हाँ, कदम रख देना। वीडियो क्यों इशू कर रहे हो? वीडियो करेंगे हम, वो भी कर रहे हैं वीडियो, वो उसके साले थोड़ी। हाँ, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मान सम्मान लड़ाई, अगर वो हत्यारा अल्टीमेटम दे के आएगा और वो इस मेवात को बिल्कुल घास फूस समझेगा, तो देखो इज्जत तो आप भी रखते हो, हम भी रखते हैं। ये तो हम कहेंगे भाई तू आ जाना, पाम धर के बताओ, ठीक है। हिंसा फैलाने की पहल वो करता है, पहल इधर से नहीं हो रही, पहल वहाँ से हो रही है। उनका कौन है? बिंटू क्या है? बिंटू कहा है, वो कर रहा है गड़बड़, वो कह रहा है ससुराल आ रहे हैं, कभी ये मत कहना, ये ना कर। ये कौन सा तरीका है? शोभा यात्रा का मतलब समझते हैं क्या वो? अच्छा, जो आपके वीडियो आए उसने तो लोगों को भड़काया। एक वीडियो भड़काते हैं, उनके 1000 वीडियो ना भड़काए कोई। Unchecked power of provocative messaging on social media. Isolated tensions transformed into a harrowing storm of communal violence at Nuh in Haryana. With Nitin Jain, Bureau Report, India Today. But you may have heard of a Bittu Bajrangi, you may have heard of a Monu Manesar, but have you heard of these Mohammad Jabir or Ataullah? Is there selective outrage and selective silence? I want to quickly cut across to India Today's Nitin Jain for more on this special investigation. And Nitin, bring us the latest when it comes to Ataullah and Mohammad Jabir. What was their role? What has the probe revealed so far? Atullah is a Sarpanch of Dhimri Gaon of Bharatpur village. He was very much upset the way Monu Manesar and Bittu Bajrangi were issuing inflammatory speeches and videos against his community, and the administration was not doing enough to contain those videos and speeches, and he was also perturbed
with this fact that Monu Manesar has not been arrested yet by the Bharatpur police, and these people were challenging them that they would come to the Mewat region and they will celebrate whatever they have to do. So, to contain this fact, Atullah also released inflammatory instigative video in response to Monu Manesar and this Bittu Bajrangi. And after this incident, this riots, this Sarpanch has brought down those videos and deleted, and now pleads that he didn't say anything, but on our camera he confessed that because he was very upset, and that's why he released those videos. Okay. I mean, is that a sense of entitlement? Do they think they can take law in their own hands and not have faith in the law enforcement agencies or in the judiciary of this country? Track that story. I will come back to you for more on this story, but I want to shift focus to the other big story. Is the ML Khattar government in Haryana following in the footsteps of the Yogi Adityanath model of Uttar Pradesh? Bulldozers were seen in action in Nuh after the riots. More than 200 illegal shanties were razed in Haryana's Nuh, where communal clashes killed 6 people. This anti-encroachment drive was initiated by the Haryana Urban Development Authority. Police say many of the rioters had taken shelter in these shanties spread across an acre of land. We bring you a ground report. Days after the communal violence in Nuh, the Haryana Urban Development Authority launched bulldozer action in Tauru town. In the nearly 4-hour-long crackdown, more than 200 illegal shanties housing immigrants were razed in the area by teams of the Rapid Action Force. इस वक्त हम मौजूद हैं नल्हड़ मंदिर के पास, पहाड़ी के ठीक एकदम बगल में, और आप ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 बुलडोजर चल रहे हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको हटाया जा रहा है। एकदम पहाड़ी के पास ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पक्का कंस्ट्रक्शन था जिसको तोड़ा जा रहा है। आगे लेके चलता हूँ आपको दूसरा, ये देखिए बुलडोजर 1, अब ये बुलडोजर नंबर 2 दिखाता हूँ। ये देखिए ये अंदर घुसा हुआ है और वो पूरा इलाका जो है, जो पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। At some distance from the Nalhad temple in Nuh, bulldozers were driven in the areas adjacent to the hill from where rioters fired at the VHP Shobha Yatra. Illegal encroachments of Rohingyas and illegal migrants were cleared. नूह में हुई हिंसा के बाद एक्शन में सरकार जो है वो नजर आ रही है। नूह के कई हिस्सों के अंदर इनलीगल तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं पर सरकार का बुलडोजर जो है वो चला है। इस वक्त हम मौजूद हैं तावड़ू के अंदर, जो कि नूह का इलाका है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी बस्ती जो है वो यहाँ पर लोग, जहाँ पर रोहिंग्या बताए जा रहे हैं ये रहते थे, इस पर सरकार का बुलडोजर जो है वो चला है। कल कार्रवाई की गई है और उस पर सीधे तौर पर इन तमाम हिस्सों में रह रहे रोहिंग्यास को यहाँ से खाली करने का आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। 10-20 दिन को टाइम दे देता, 2 दिन को दे देता, सामान हम इन बास में भर देता, इन बेशक तोड़ देता। अभी नाज की टंकी भरी रोका बता कहाँ खवाएंगे बड़ा कर। 2-2:30 बजे आके फिर कोई बिना कहे के सबको सब जितना भी जुग्गी था तोड़ फोड़ कर चला गया। खाने वाला कोई भी चीज बाहर निकलना, अगर खाली करना है तो ये 2 दिन मोहल्ला देते तो हम और जगह ढूंढ लेते हैं, ऐसे तो टाइम ही नहीं ना दिया। पहाड़ों में करा रहे हैं ये देखो कितने हैं। 6 people, including 2 home guards and a cleric, died in the clashes that erupted in Nuh on July 31st. Bureau Report, India Today. And shifting focus to the other big story on India First. The Supreme Court today gave a note to the scientific survey at the Gyanvapi complex at Varanasi.
by the Archaeological Survey of India. The apex court refused to stay the survey as sought by the Muslim side, claiming it would reopen old wounds of history. Non-invasive survey will be conducted, except of course of that area that was sealed off by the court earlier. The Hindus say there was a shivling there. The Muslim side had turned that area into a wuzu khana. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath made it very clear it's time to take an initiative to set right historical wrongs. The Archaeological Survey of India has been given the green light by the Supreme Court to continue its scientific survey at the Gyanvapi complex in Varanasi. The apex court has, however, directed the ASI to follow the non-invasive methodology and has forbidden any excavation. The ASI is to submit its report to the trial court. हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। The Supreme Court disposed of the petition filed by Anjuman Intizamiya Masjid Committee challenging the order of the Allahabad High Court that had given a nod for the survey to continue. The Muslim side had objected to the survey, claiming that it was a violation of the Places of Worship Act 1991 and that the Muslim side was gradually being edged out through salami slicing of its property. Appearing for the Gyanvapi Masjid Committee, senior advocate Huzaifa Ahmadi argued, by ordering the survey and by going back in history as to what happened 500 years ago, are you not violating the Places of Worship Act? The process is such that you are reopening the wounds of past. When you start a survey, you are unraveling the wounds of the past. The Supreme Court, however, refused to stay the process of survey or go into the maintainability of the petition at this stage. The Hindu side sees the nod to the ASI survey as a major victory. The Archaeological Survey of India team reached the premises at 7:30 a.m. in the morning and a 40-member team began the survey scientific process. सर्वे शुरू हो गया है, सुबह 7-7:30 बजे से शुरू हो गया है और एसआई अपनी कार्रवाई कर रहा है अपने अनुसार। उनकी जो सिस्टम है, जो अपने सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, मेजरमेंट सब कर लिए हैं और धीरे धीरे काम को बड़े सुचारू रूप से और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वे आगे बढ़ रहा है। Politics on the survey escalated, with left leaders accusing the government of trying to divide communities. The Modi government is trying to divide the people ahead of the elections to come. They want to make a division in the society. They want to make a Hindu-Muslim divide in the country. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath also waded into the controversy, insisting the time had come to set right historical wrongs. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। The ASI will submit its report to the trial court and its finding will not be in a sealed cover. The senior advocate also referred to the Babri Masjid demolition and said that this report of the ASI survey must be kept sealed. Court, however, not accepting this line of argument and said that it is legally valid for the district judge to ask for a scientific survey and there is no reason for the court to interfere, especially since safeguards with regard to the structure itself have already been put in place. The survey, therefore, will continue and the report will be submitted before the district judge. In New Delhi, with Srishti Ojha and Kanu Sharda, this is Anisha Mathur for India Today. Are symbols like trishuls found inside a mosque? There are several other aspects that the Archaeological Survey of India will find out in its report through known
invasive measures, and we'll be tracking that story very closely. That is all I have time for on India First this evening. Many thanks for watching. Coming up next is Business Today with Sakshi Batra. Stay with us.